Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So we have participants coming over, and I think it's better that I should start. So welcome to the webinar, and I think ये जो topic है जिस पे मैं बहुत अरसे से बात करना चाह रही थी वो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है. It's about interpersonal skills and understanding empathy. So okay, we have, participants coming over, so I think it's better if I try to enter them in as well, because this is the only way I can do this. Okay, so, okay, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है. Is it clear now? Now can you hear me? Is my voice audible now? Please do tell me if you can hear me properly so that I can start. Okay, so हम लोग बात कर रहे हैं interpersonal communication पर, और that is something extremely important. Interpersonal skills जो हैं हमारी, वो हमारी daily life में हम लोग रोज use करते हैं. और interpersonal skills में ही we have the most important skill, which is of course our interpersonal communication. So you guys are entering and I'm, admitting you in the meeting. Okay. And मतलब हम लोगों को interpersonal communication को understand करने से पहले ये पता होना चाहिए कि interpersonal communication जो है वो हमारी जिंदगी में क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है. Why is it so important for all of us? Because we interact with people every day. हम लोग रोज जो है अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपनी जो है नेटवर्किंग में हम लोग रोज इंटरेक्ट करते हैं. तो इसके लिए जो हम लोग स्किल यूज करते हैं वो हमारी स्किल होती है पीपल स्किल, और इस पीपल स्किल को हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं. And interpersonal communication is the transfer of information from one person to another person and to more than one person as well. जब हम ग्रुप्स में अपने मैसेज को पुट अक्रॉस करते हैं तो इसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं. Okay, so the question is, why is interpersonal communication so important? Interpersonal communication इसलिए हमारी लाइफ में इतनी ज़रूरी है क्योंकि हमारी लाइफ में जितनी भी सक्सेस है वो सक्सेस जो है that basically depends upon interpersonal communication, and that success so आप देख लें आपकी लाइफ में the different areas में success जो है, whether that is in your relationships, whether that is in your career, whether that is in different areas of your life, you need to have good people skills. You need to have good interpersonal skills. हम लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, हम लोग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, और हम लोगों को यूनिवर्सिटीज में डिग्रीज दी जाती हैं. इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाती है आपको मेडिसिनल डिग्री दी जाती है, आपको टेक्निकल नॉलेज पे बेस्ड डिग्री दी जाती है, आईटी के एक्सपर्ट आप बन जाते हैं. लेकिन आपको कोई भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो नहीं देता, वो नहीं सिखाता. आपकी जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, nobody teaches you that, and you need that skill for your success in life. When you enter into the practical zone of your life, that is the most important skill that you need for the success and satisfaction of your life. तो interpersonal communication जो है हम लोग अपनी लाइफ में 80 to 90% यूज कर रहे होते हैं,
because we are interacting with people, you know, like 90% of the time in our homes, with our families, like I said, with our friends, with our network. All of us are interacting with people, you know. So इस स्किल को पॉलिश करना, इस स्किल को बेहतर बनाना, इस स्किल को बेहतर बनाना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है. Because, you know, the more we become proficient in our interpersonal communication, the more we realize कि हम लोग जो हैं अपनी लाइफ में एक, you know, सक्सेसफुल इंसान बनते जा रहे हैं. ओके, इंटरपर्सनल स्किल जिसे मैं आईपीएस भी कह सकती हूँ, जिन लोगों की पीपल स्किल या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, वो लोग जो हैं, okay, let me add few more people. Okay, so वो लोग जो होते हैं, they are, you know, very much आप कहते हैं they are very successful in their relationships. People with good people skills or interpersonal communication skills are very good, you know, in building their career, or they are very successful generally. और अगर देखा जाए तो हम लोग as women, you know, we are naturally inclined towards better communication skills. Naturally, जो women होती हैं, you know, they have they are more you can say emotionally intelligent. और intercommunication में आपकी जो emotions हैं उनको understand करना वो बहुत important होता है. तो ये जो soft skill है, ये naturally as women we tend to be inclined towards that. We tend to be naturally good communicators. लेकिन सोसाइटी में हम लोग की जो डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस ऐसे हो गई है कि वी आर मोर प्रोन टुवर्ड्स टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, pragmatic knowledge. So we sort of, you know, ignore or take for granted this already existing natural skill that we possess and we can nurture and we can, we can make it better and better in order to interact with so many people. तो जहाँ तक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की अब मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो according to, you know, Brian Tracy, he is a very great motivational speaker, and he is someone who is an efficient leader in terms of communication and business. तो उनके हवाले से उन्होंने, you know, 5 A's बताए हैं. There are 5 A's जो कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हैं. और जब हम इन 5 A's की बात करते हैं तो उसमें, you know, we have like the first A जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो कि आपकी IPS, आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. वो A क्या है? That A is acceptance. Okay, so the first A is acceptance. एक्सेप्टेंस क्यों ज़रूरी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में? क्योंकि आप जब अनकंडीशनली किसी बंदे को एक पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हैं और उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हैं, then you are communicating to that person that you have a positive attitude और आपका जो पूरा ओवरऑल एक इमेज है वो बहुत पॉजिटिव है, you know. So you are basically giving a very positive vibe to the other person. और इसलिए आपकी जो intercommunication है वो बहुत ज़्यादा solid है, वो बहुत positive है, और acceptance जो है वो हमेशा आपको एक first A के तौर पे याद रखना चाहिए. Then we have appreciation, you know. So always make sure that you are appreciating the other person while communicating. जब हम एक इंसान से इंटरेक्ट करते हैं, जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें उनको ये बताना चाहिए कि उनकी वैल्यू हमारे लिए कितनी ज़्यादा है. क्योंकि psychologically people have 2 needs. They want to feel good about themselves, they want to feel, you know, good about themselves, and they want to feel respected and important. So अगर आप लोगों को जो है ये एहसास दिलवाएंगे कि yes, you know, you are grateful for their presence,
उनको आप थैंक यू कहेंगे अगर उन्होंने आपकी कोई हेल्प की है या आपको गाइड किया है या उन्होंने आपको किसी भी उनका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में, तो उनको प्लीज ये एहसास दिलवाएं, इस उनके एफर्ट को एक्नॉलेज करें। चाहे आप जो है अपने ड्राइवर को थैंक यू कह रहे हैं, अपने मेड को थैंक यू कह रहे हैं, अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को कह रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को कह रहे हैं, अपने पेरेंट्स को कह रहे हैं, डू से द वर्ड थैंक यू बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू द अदर पर्सन। ठीक है, जब आप थैंक यू कहेंगे तो इसकी जो एक पावरफुल इम्पैक्ट है वो दूसरे पे ये होगा कि दूसरे बंदे को ये एहसास होगा कि आई एम इम्पोर्टेंट, आई and that person will feel good and respected. So appreciation जो है वो आपने सबके लिए शो करना है, ठीक है। Then we have approval. Everybody needs approval. Everybody wants to feel good about themselves. Everybody wants to feel a part of a certain group. ठीक है, we have a deep need for approval. हम ये चाहते हैं कि हम किसी ग्रुप से बिलोंग करें, किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करें। और जब आप एक दूसरे को ये एहसास दिलाएंगे, एक वेलकम का एहसास देंगे आप लोगों को कि यू आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली, यू आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, यू आर इनवाइटेड, यू आर वेलकम। सो एक वेलकमिंग वाइब देंगे, एक इनवाइटिंग वाइब होगी आपकी। आप जब दूसरों को ये एहसास दिलाएंगे कि they are important and they are welcome and you are giving them the thumbs up, the approval, then of course then that person will feel good about themselves. Then we have admiration. Again, a very important communication skill to have. Why is admiration so important? Because, we want to give admiration is important because, we have an intrinsic need in our brains, in our, hearts, that we want to believe in someone. We want to believe in the goodness of people. सो जब आप किसी को एडमायर करते हैं, जब किसी के एफर्ट को एडमायर करते हैं, जब आप किसी की पर्सनालिटी को, कैरेक्टर को, उसकी हैबिट्स को एडमायर करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी कम्युनिकेशन पर देता है। आप बेसिकली लोगों को ये एहसास दिलवाते हो कि if you like someone's physical appearance, give them a compliment, say that you are beautiful, you are attractive, and I really like your dressing sense, and or you can give a very genuine, a very sincere compliment on their character, that you are a very honest person, you are a very caring soul, and you are a very reliable person. So these are the things, that you are a great support for me. All of these compliments are very genuine, should be genuine, and you should always keep showing such compliments in your general interpersonal communication. And then we have the last one is attention. Okay, now let me really tell you the importance of attention. Attention is key in interpersonal communication, because in this technological age that we are living in, our attentions have been like totally hijacked and manipulated by social media. Our attention spans are very short, and we our attention spans are so short, our attention is so much divided into so many things that it's impossible to totally give attention to someone these days. So when you are interacting with a person, make sure you give them your undivided attention, because that makes the person feel very important. It makes the person feel good about themselves. So when you are giving the other person your full attention, if somebody wants to talk to you, if somebody wants to speak to you, you give them your ear, you give them your attention, and they will totally respond to you in a very positive light, because it will naturally and instantaneously create a very solid, powerful rapport, with the other person. And that person will be inclined and open to receive your message fully. So make sure that you are,
really interacting with the person, openly, and you are receptive to the person, you are giving them your undivided attention, because attention is totally key in interpersonal communication. So now we know how important it is, because when you have good interpersonal communication, you are when you are an efficient communicator, when you are a good communicator, you are naturally, you can say, a very likable personality. You are a very amicable personality, a very charming, amicable personality, if you have a good communication skill. So let me admit someone else. Okay. So the thing is that it is extremely important that you develop this, communication skills daily in your life. And consciously आप रोज सोचें कि आज मैंने अपने जो कॉलेज के गेट कीपर है उनके साथ कैसा इंटरेक्ट किया, आज जो मेरे घर में मेड आई है उसके साथ मैंने कैसे इंटरेक्शन किया, आज मैंने अपनी फ्रेंड के साथ कौन से वर्ड्स यूज किए, बिकॉज द पावर ऑफ वर्ड्स कैन बिल्ड यू अप and it can break you down. So make sure that vocabulary is also key in interpersonal communication. The language that you are using, the people skills that you must develop, all depend upon the language that you are using. Okay, because when we use great words, supportive words, kind, powerful, positive words in our lexicon, we are creating a very, very magical, positive effect on other people. Because if we use supportive and encouraging words for others, they can actually build up the trust, the confidence in the other person. They can even help in building their character. So make sure that you are sensitive to the usage of your language. Make sure that the words you are using are such that they create a positive effect, the positive impact on the other person. And we have already discussed about interpersonal skills, which is, of course, I'm focusing on interpersonal communication. और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में मैंने भी आपसे बात ये की है कि हम लोग जब डेली लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए हम लोगों को क्यों ज़रूरी है हमारे लिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना। सबसे पहले तो मैंने ये अभी बात की है कि हमारे लिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमने लोगों के साथ जो है एंगेज करना है, और जब हम ये स्किल डेवलप कर रहे होते हैं तो इसमें हमने लोगों के साथ एंगेज करने के साथ साथ हमने अपने अंदर जो है एक अपने इमोशंस को भी हमने मैनेज करना सीखना है, ठीक है ना। वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज आवर स्ट्रेस एंड मैनेज आवर इमोशंस एज वेल. दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ interpersonal communication, because if you lose your cool, if you lose your anger, if you lose your stress, during the interpersonal communication, then you will totally be, you are going to totally be a negative communicator, so to speak. So in order to be an efficient communicator, in order to be a good efficient communicator, it's extremely important. In order to achieve excellence in becoming a great leader, or being an efficient communicator, you have to really build this muscle, build this skill to manage your emotions and manage your stress level as well, because that is also a part of interpersonal communication. Okay, so एक बहुत important point अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ regarding interpersonal communication, because whenever we are talking about interpersonal communication, we should always look at the Islamic perspective, because when in our own religion Islam, we have a very solid role model in the form of an efficient communicator.
ओके, एक वेस्टर्न ऑथर हैं हार्ट के नेम से, उन्होंने एक बुक जो है लिखी, और दैट बुक वाज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। उन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में आपको पता है कि उन्होंने नंबर 1 पे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है उन्होंने नाम एंटर किया as the most efficient communicator for mankind. सो अगर एक वेस्टर्न फिलोसोफर हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज़्यादा आइडियलाइज कर रहे हैं, तो हमारे लिए हमारे पास तो एक परफेक्ट रोल मॉडल ऑलरेडी मौजूद है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं एज एन एफिशिएंट कम्युनिकेटर। उन्होंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ही वाज एन इमेंसली इफेक्टिव लीडर। आज भी हम देखते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इन्फ्लुएंस है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हम उसको फॉलो कर सकते हैं। According to the Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, we need to convey our message very clearly, 3 times at least, when we are communicating with the other person. जब हम अपने मैसेज को 3 times communicate करेंगे दूसरों के साथ, तो it's going to make our message, our words very, very understandable and easy for the other person to understand, right? So it's extremely important that we understand how important it is that we have to be very cautious in conveying our message as clearly as possible. और दूसरी बात ये है कि देखिए, one other thing is कि our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he focused on character building and good manners. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो गुड मैनर्स जिस इंसान में होते हैं वो एक बेटर कम्युनिकेटर भी होता है और ही इज द बेस्ट ऑफ पीपल। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके मैनर्स जो हैं जिसे हम अखलाकियात कहते हैं वो अच्छे होने चाहिए। Try to refrain from slang language, vulgar words. Try to use, वही बात होगी कि the power of words is extremely important. You should be sensitive in your language, the kind of words that you are using, that is going to have a positive impact on the other person. तो ये आपके good manners में आ जाएगा. Then you should have build patience in yourself. You should know how to control your stress. You should know how to control your anger, and you should be really, really cautious and careful and sensitive while interacting with the other person. And you should know that you are interacting in such a way that it is creating a positive effect on the other person. और यहीं पर मैं बात करूंगी empathy की. So our whole webinar is focused on understanding empathy in communication as well. So empathy is that skill. First, let me just define it. Empathy is that skill that actually, makes us understand others, the other person's feelings, emotions, thoughts, situation. In fact, that lets us be in another person's shoes. So empathy is basically, that skill that makes us understand the other person's feelings and emotions. And it just makes us see the other person's world, right? So empathy is the skill that we need to develop in our interpersonal communication. और सुन्नत में भी जब हम देखते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बहुत इस पर जोर दिया, फोकस किया. गुड मैनर्स में एम्पैथी भी आ जाती है, ऑफ कोर्स. पेशेंस, टॉलरेंस, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द एम्पैथी. तो एम्पैथी एक बहुत पावरफुल स्किल है जो आपको डेवलप करनी चाहिए, बिकॉज our whole you can say interpersonal communication depends upon empathy. और अगर आप में एम्पैथी नहीं होगी तो आप बहुत ज़्यादा जो है आपकी कम्युनिकेटर, आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन सकते. इवन इन बिजनेस, इवन इन योर रिलेशनशिप्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड से इन योर रिलेशनशिप्स you need the skill of empathy. In order to have better relationships, you need to have good empathy.
ओके एम्पैथी डेवलप करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप्स फ्लोरिश करेंगी, बिल्डअप होंगी, चाहे वो रिलेशनशिप्स आपकी फैमिली में है, आपके फ्रेंड्स में है, आपके नेटवर्क में है, आपके बिजनेस में है, आपके करियर में है, you know, a whole range of relationships. So how do we develop empathy? Empathy हम कैसे develop कर सकते हैं? Let me talk about that. We can develop empathy first and foremost. We should have a perspective. हम लोगों को वही मैंने बात की ना, दूसरे का perspective हमने समझना है. Perspective building. हमने लोगों के perspective को understand करना है. So how can we make the perspective? Perspective taking refers to being willing to able to see and feel the world through the eyes of the other. Walking in their shoes. आपने दूसरे का person का perspective understand करना है, ठीक है? अगर वो आपसे different है, you have to accept it, you have to acknowledge it, you have to understand it. Then we have, staying out of judgment. Very, very important point. जो कि हम लोग बहुत naturally करते हैं. We have to be non-judgmental. We don't have to judge the other person. If the other person is going through a pain, a trauma, a sickness, a health issue, a financial issue, an educational issue, whatever, social issue, we don't have to judge them. अगर हम उनको judge करेंगे तो it means कि हम उनके जो problem है उसको minimize कर रहे हैं. हमने उसको accept करना है, acknowledge करना है, और हमने सोचना है कि अगर हमारे साथ ये situation होती तो क्या हो. So, लेकिन most of the people don't do that. They just judge the person. A lot of people, what they do is they say, oh, that person is going through a financial crisis or a health issue. It means that, they must have done something really bad in their life to, deserve this. Or, maybe they're not that strong or confident or tough or whatever. And, हम लोग उनको इस तरह की phrases कहते हैं कि toughen up, let it go. But we don't know the actual situation that person is going through. So you have to be non-judgmental in, if you want to build up your empathy skills, right? So non-judgmental. Then we get towards the third thing is recognizing the emotions. अगर आप किसी में कोई mood swing देख रहे हैं, कोई unnecessary, कोई unusual किस्म का आप, mood swings देख रहे हैं, somebody is totally depressed or down, you cannot just totally ignore their feelings. You have to recognize their feelings, because that is extremely important. Then we come towards communication, of course, that we have to communicate, our feelings to that person. We have to show them our support, because that is extremely important. अगर हम उन लोगों को अपनी support show कर देते हैं उस time पर, जिस time पे वो बंदा उस चीज से गुजर रहा है, इस challenge को face कर रहा है, तो वो भी बहुत जरूरी है. क्योंकि when we are communicating to that person that they are important and we are there for you, we understand, then this is a great, support, you can say supportive clue for that person that yes, I am being listened. Because जब आप किसी को ये कहते हैं कि I'm there for you and I understand you, it means कि that person feels naturally heard and seen. So this is extremely important. All right. And what else? Okay, so जहाँ तक empathy की बात है, तो एक और skill यहाँ पे आपको एक चीज देखनी होगी. ब्रेने ब्राउन जो है, वो she is an expert on empathy, and she says that empathy is a skill that we can train and will practice. It can strengthen, it can strengthen more and more like a muscle. Okay, so जिस तरह आप exercise करते हैं हम लोग, okay, जिस तरह हम exercise करते हैं अपने muscles build करने के लिए, in order to stay fit, हम लोग कोई new word जो है सीखते हैं in our lexicon, उसमें इजाफा होता है. हम कोई new skill सीखते हैं, कोई new game सीखते हैं, कोई new dish के बारे में जानते हैं, कुछ सीखते हैं. तो we actually इसी तरह empathy को भी हमें practice करना है. It's a muscle. You have to build it every day. And how can you use it? How can you build it? You can build it by practicing empathy in your daily life every day. जब आप इसको रोज अपनी life में practice करेंगे, only then you will be able to be proficient in it, be skillful in it, and to actually
build this empathy in your interpersonal communication. Right. So when we give others empathy, we allow them to feel, to be fully heard, and to be accepted. We also encourage compassion, and we also add intimacy to flourish in our relationships. तो एम्पैथी एक इतनी खूबसूरत चीज़ है कि ये आपकी जो रिलेशनशिप्स है उसको फ्लोरिश करती है, और आपकी जो रिलेशनशिप्स है उसमें कंपैशन लेके आती है, यानी कि जो रहम दिली वो लेके आती है, और आपकी you become an authentic person, and you also जो intimacy है उसको भी ये फ्लोरिश करती है. Right. And empathy also allows you to take a risk and put your true self out there. क्योंकि जब आप किसी दूसरे बंदे की एक चैलेंजिंग सिचुएशन को समझ रहे होते हैं ना, तो आप भी एक रिस्क लेते हैं, एक इमोशनल रिस्क, and you are putting yourself out there. You are putting yourself in that person's shoes, and you are actually trying to understand that person's situation. So authentic हो जाते हैं आप एकदम. So authenticity क्या होती है? Authenticity is something, it is a word that we, use often. Or authenticity is, we can say that it is a word that is extremely important because, authenticity is something that enters the popular lexicon because it happens to something powerful in our culture. And Brene Brown जो है वो इसके बारे में कहती हैं कि empathy and shame are on opposite ends of a continuum. So, basically जब हम empathy की बात करते हैं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब आप अपनी interpersonal communication में empathy नहीं use करेंगे तो आपको पता है empathy का opposite क्या है? Empathy का opposite है shame. Because you have shame in your personality. That is why you are not accepting, acknowledging, and understanding the other person's discomfort. तो इसलिए आपको जो है empathy जब आप develop कर लेंगे ना अपनी interpersonal communication में, तो shame जो है वो खत्म हो जाएगी. और shame जो है वो क्या होती है? Shame होती है silence, secrecy, चुप रहना, अपने जो इमोशंस है, अपने जो अनकंफर्टेबल इमोशंस है उनको एक बॉक्स में रखना, उनको किसी के साथ शो ना करना, हाइड करना. But empathy is, where empathy exists, shame cannot survive. So you have to learn how to nurture your own emotions and express them confidently, because that is being authentic in your own right. This will totally give you power. And empathy is extremely powerful emotion. Empathy is an extremely powerful skill because it is the most important and powerful skill for your interpersonal communication. और जब आप empathy develop कर लेंगे अपनी interpersonal communication में, जब आप लोगों के point of view को understand करना शुरू कर देंगे, उनको shameful नहीं करेंगे कि नहीं, don't feel this, just grow up, or you should be strong. It's okay, it doesn't matter, it's, just don't care about it. These kind of minimizing attitudes means कि आप खुद भी जो है आपने अपने जो uncomfortable emotions है उनको acknowledge नहीं किया, and that is why you are trying to minimize the other person's emotions. So it's extremely important to express empathy. Do express empathy. And we are just going towards the end of our we are actually coming towards the end of our webinar, and the points that I would like to conclude upon are that we have to learn how to express empathy, because empathetic jab hum ho jate hain na, or let me tell you, being empathetic is not easy. It's not easy to be empathetic. It may look like it, लेकिन empathetic होना आसान नहीं होता. Because जब हम empathetic होते हैं ना, तो हमें दूसरों के भी uncomfortable emotions को हम जो है वो understand कर लेते हैं. To be non-judgmental, to understand others person's feelings, and to communicate your
understanding of the other person is not easy. Because जब आप दूसरे person को understand कर रहे होते हैं तो आपको खुद भी vulnerable होना पड़ता है. And vulnerability is a powerful feeling, and sometimes you have to accept your own weaknesses in your own fragilities as a human to be vulnerable. So empathy and vulnerability are very much connected. और जहाँ पर empathy होगी तो वहाँ पर vulnerability होगी. ठीक है. तो आपने I mean, there are certain situations we cannot be vulnerable in front of everyone. We have to be vulnerable in front of those people that we trust, that that are reliable. And sometimes empathy जो होती है वो तो हम empathize बहुत से लोगों के साथ कर रहे होते हैं. और जब हम empathy की skill को develop कर लेंगे interpersonal communication में, हम एक better efficient communicator बन जाएंगे. हमें positive response ही मिलेगा दूसरी side से. और हमारी जो relationships हैं वो flourish हो जाएंगे, right? And somebody is raising the hand. Okay, hi to you as well. So Sabahat, I think. Okay, so when we are actually becoming empathetic towards the other person, it means कि हम लोगों में ये courage और confidence पैदा हो गया है कि हम दूसरे के challenging situation को understand करें. So I cannot say that this is the most important skill to develop as an efficient communicator, because in your practical life it can be very beneficial for all of us. And empathy can actually transform you as a person. So and biologically and बहुत सी researches भी हुई हैं, neuroscientists भी ये कहते हैं कि we are wired for empathy, we are wired for empathetic connection in our lives. क्योंकि हम लोग इतने हाइपर कनेक्टेड हो चुके हुए हैं सोशल मीडिया पे कि हम रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो गए हैं. तो रियल लाइफ में भी हमें एक एम्पैथेटिक जेन्युइन कनेक्शन पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिकॉज खासतौर पे आजकल आप लोग देख रहे हैं कोविड की वजह से भी वी आर सोशली फिजिकली डिस्टेंट. So it's very important to have an empathetic attitude and to realize the importance of understanding empathy in our interpersonal communication. ठीक है. Or because we are wired for connection, we are wired for connecting with others, we are wired to trust others, we are wired, biologically we are wired to trust others, to be connected with others, to have an empathetic, genuine connection. Because this is the sign of being open to new experiences. So, and it is also a sign of a positive and open personality. So, here I would like to, conclude my webinar, and I would like to say that this was a very, very good, digital experience in actually connecting with all of you and to actually talk to you about this very, very important topic that I wanted to talk on for a very long time: interpersonal skills and understanding empathy. And I'm sure that it was beneficial. And, the importance of empathy is, of course, extremely important. So here I would like to, end this webinar.